The visuals you can see on your screen are of the Delhi BJP holding protests outside and against Manish Sisodia, the Deputy Chief Minister. But these protests are taking place outside the Delhi Assembly. This is my colleague at News 18 India bringing you this report. Take a look. कार्यकर्ता जो है ये विधानसभा के बाहर आकर और इकट्ठे हो गए हैं और देखिए मेट्रो स्टेशन के पास तक यहाँ पर पुलिस फिलहाल खदेड़ लाई है, लेकिन यही रास्ता है विधानसभा जाने का। यहाँ मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। अब यही मेट्रो स्टेशन के बाहर ये तमाम लोग बैठ गए हैं। इनका कहना है कि शराब घोटाले की बात हो, आबकारी नीति की बात हो या शिक्षा के घोटाले की बात, जिसकी मांग लगातार बीजेपी उठाती आ रही है, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और साफ तौर पर कि मनीष सिसोदिया इस्तीफा दें। यहाँ आप देख रहे हैं कि अब तमाम प्रदर्शनकारी जो है यहीं आकर बैठ गए हैं मेट्रो स्टेशन के सामने। पीछे का जो पूरा रास्ता है उसको बैरिकेड से बंद कर दिया है। सीआरपी को यहाँ पर बुलाया गया है, जो सेना बल है उनको बुलाया गया है और फिलहाल जो तमाम प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ खड़े होकर मेट्रो स्टेशन के बाहर ही प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ बताएं कि विधानसभा सत्र अंदर चल रहा है। आज 1 बजे अरविंद केजरीवाल विधानसभा सत्र में भी बोलेंगे। उससे पहले बीजेपी का ये फ्लैश प्रोटेस्ट, जिसकी सीधी तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव में हम दिखा रहे हैं, ये तमाम प्रदर्शनकारी फिलहाल यही मेट्रो स्टेशन के बाहर मौजूद है। यहीं पर ये लोग बैठ गए हैं और इनका कहना है यहाँ से ये नहीं जाएंगे। हरीश खुराना हमारे साथ है। हरीश जी, किसने ये प्रदर्शन? देखिए, जिस प्रकार से ये लोग अंधागर्दी मचाई हुई है, सेशन बनाया हुआ है, 5 दिन से कोई काम नहीं हुआ और कल जिस प्रकार से इन्होंने पुतला फूका विधानसभा के अंदर, ये असंवैधानिक है। और आज हम इस्तीफे की मांग को लेकर इनके प्रदर्शन करने आए हैं। मनीष सिसोदिया करप्ट है, चोर है, उसी मांग को लेकर उनका इस्तीफा होना चाहिए, उस मांग को लेकर हम यहाँ आए हैं। यहाँ पर सीधे इस्तीफे की मांग को लेकर आए। मैं एक बार फिर तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए सब बैठ गए हैं यहीं पर और यहीं बैठकर अब प्रदर्शन जो है वो जारी किया जा रहा है। साफ तौर पर इनका कहना है कि 5 दिन से विधानसभा का सत्र बुलाया हुआ है, जो कि लोगों के पैसे की बर्बादी भी है, जिसमें एक भी काम दिल्ली की जनता के लिए नहीं हुआ। यही लगाओ भाई साहब यहाँ। Alright, as you can see, the visuals on your screens are just a continuation of a back and forth volley that we've seen between the BJP and the Aam Aadmi Party over the last few days. These started, you'll remember, a few weeks back when there was controversy over the Delhi government's excise policy. Remember, today, in fact, Delhi goes back to its old excise policy. You're going to have government liquor stores opening up again, about 300, which is why today is a big day in that sense. But to bring you more context on the policy itself, you'd had the Delhi government try to introduce a new excise policy that would see private-run liquor shops across the city. However, right in the beginning of August, after the Lieutenant Governor's statements, you had the Delhi government actually go back and revert to their old excise policy. That's actually caused quite a bit of controversy. My colleague Akash is on the phone right now to bring us more details about this protest in specific. Akash, just tell us, because for our audiences at this point, it's possibly hard to keep track. There are so many allegations that have flown between both parties. Right now, what is the BJP focusing their protest on? So, right, Toya, so this protest is basically on the excise policy first, but as you rightly mentioned, this is not the only issue between the Aam Aadmi Party, which is the ruling government in the national capital, and also the BJP. So we have been told that, other than excise policy, they are alleging corruption in the building of classrooms, and also, Aam Aadmi Party, on the other hand, is talking about Operation Lotus, where they are alleging that BJP is trying to break their party. But as of now, while the Delhi Legislative Assembly session is on, we are seeing this particular protest where you can see the BJP leaders are basically raising slogans against the Aam Aadmi Party government, because their claim is that Aam Aadmi Party is not a party of Aam Aadmi, but in fact they are involved in the kind of corruption that we witnessed in the liquor policy, the excise policy. In fact, I'm so sorry. And also, this all started with the LG's recommendation, and now we are seeing that CBI is probing into this particular policy. But on the other hand, Aam Aadmi Party is saying that this is the kind of politics that BJP generally plays. They are trying to break our party, and in fact, there were allegations that 20 crore were offered to more than 20 of the Aam Aadmi Party MLAs, and they were promised of several posts in the government, and they were asked to help BJP in forming the government in Delhi. So as of now, this is BJP leaders protesting against the ruling government in Delhi. They have
multiple charges, and one of the prominent charges that Deputy Chief Minister Manish Sisodia, who is also the excise minister, was very much involved in the corruption in the new excise policy. In fact, this policy has been rolled over, and from today onwards, we are seeing the old policy regime. But, this is the latest development that our BJP leaders are protesting outside the Delhi Legislative Assembly, and it is very much in concern with the excise policy, onto which CBI is also probing as of now. All right, Akash, I do want to ask you, could you tell us more about action within the assembly too? We are aware right now that the BJP just saw a leader of theirs who was suspended for the rest of the session, but bring us more updates from inside the assembly. Okay, that's my colleague Akash. We'll try to re-establish a connection with him. As you can see, the BJP staging a massive protest outside the Delhi Assembly. They are protesting against the Deputy Chief Minister Manish Sisodia. Remember, in the last few days, the BJP has trained their attack against Sisodia on two fronts. As we already just discussed, one has been the excise policy. However, more recently in the last few days, they've also targeted an attack on him when it comes to his handling of the education department. According to them, he mismanaged large amounts of money. Now, the Aam Aadmi Party has said that all of these claims are bogus. In return, they've in fact targeted the Lieutenant Governor of the Delhi area. They've said that he was involved in corruption. Yesterday, you had a number of Aam Aadmi Party leaders stage a protest outside the CBI demanding that CBI officials launch an investigation into the Lieutenant Governor. Now, my colleague Priyanka is with us live right now. She is a reporter with News 18 India. She's with us right now to bring us more details. प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप हमें बता सकते हैं अभी ग्राउंड पे क्या हो रहा है अभी? जी बिल्कुल, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रही हूँ। दिल्ली विधानसभा ये लेजिस्लेटिव असेंबली है जहां अंदर फिलहाल सेशन चल रहा है और बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि दिल्ली बीजेपी ने यहाँ पर एक फ्लैश प्रोटेस्ट किया जहां पर फिलहाल पुतला दहन किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का ये पुतला है जिसको फिलहाल यहाँ पर जलाया जा रहा है। साफ तौर पर जो बीजेपी के प्रोटेस्टर्स यहाँ पर हैं उनका कहना है कि जो लिकर पॉलिसी है और जो लगातार ये लोग क्लासरूम घोटाले की बात कर रहे हैं उसके खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही इनका ये भी कहना है कि 5 दिन हो गए हैं विधानसभा का सेशन चलते हुए, एक भी दिन यूजफुल नहीं रहा है। ऐसे में लोगों के पैसे की बर्बादी है। पर मेनली अगर बात की जाए तो मनीष सिसोदिया के इस्तीफे को लेकर ये प्रदर्शन है। फिलहाल भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि विधानसभा के मेन गेट से इनको थोड़ा दूर कर दिया गया है, लेकिन बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के बाहर फिलहाल ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ तमाम आप प्रोटेस्टर्स को देख रहे हैं जो नारेबाजी लगातार करते आ रहे हैं। और यहाँ आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि ये तमाम लोग जो थे ये बैरिकेड चढ़कर गेट तक पहुंच गए थे, वहां पर इनको पुलिस ने रोका है। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से दिल्ली में फिलहाल हालात बने हुए हैं और जो लगातार हम बात कर रहे हैं वहां उसको लेकर इनका कहना है कि आबकारी नीति हो लेकर पॉलिसी हो या शिक्षा क्लासरूम घोटाले की बात हो, दोनों ही मुद्दों पे मनीष सिसोदिया जुड़े हुए हैं क्योंकि वही एक्साइज मिनिस्टर भी थे और वही एजुकेशन मिनिस्टर भी है। तो ऐसे में इनके इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार बीजेपी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है। साथ ही अंदर का भी अपडेट आपको दे तो जो दिल्ली बीजेपी के विधायक है उनमें से विजेंद्र गुप्ता को सेशन के लिए आउट कर दिया गया है। तो ये भी नाराजगी का कारण है कि विपक्ष जो है, ऑपोजिशन जो है वो अंदर भी नहीं बोल पा रहा है।